All right. Hi, guys. This question is CAT 2020 ka question. In case you are able to solve this set in CAT 2020, if the same kind of question come in CAT 21, this is worth 10 lakh rupees. Why 10 lakh? Because if you are able to solve two sets, which means 8 question correct in the CAT exam is equal to 95 percentile, which is more than sufficient to clear the cutoff for even the main IIMs. Of course, provided you do well in the other two areas as well. ये खत्म कर लो, आपको 20 लाख का जॉब मिलेगा. Divide by 10, divide by 8 question. Each question is worth 2.5 lakh. 2.5 लाख का एक question, and there are 4 questions based on this. All for a theta question. अगर आपने कर लिया तो you are CAT 20. See, this is the main problem. This year you are going to give CAT 2021. If you crack, your career is based on that. Your family pride is based on this. Your life is based on this. You will do this. They will do that. Yeah, 10 days to CAT, 8 days to CAT. You start feeling scared. In that case, if I give you even an easy question, like find the value of 2 plus 2, you will trust me, think twice before solving the question. Yeah, your brain is half dead. I consider CAT exam to be like Bali. बाली अगर याद हो तो बाली के पास ही हैड अ पावर, जो भी हमारे सामने आएगा उसका पावर बिकम हाफ. सो कैट ऑफ दिस प्रॉब्लम, whoever come in front of cat, your dimag is already half dead. Oh my god, this is cat ka exam. Fine, trust me guys, this is the easiest set you will ever find. This is the easiest set you will ever find in cat 2020 paper, and you will solve two set like this. Time given to you is 20 minutes. आराम से ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, आराम से सॉल्व करो. 20 मिनट का है. ठीक है, एक बार पॉज करके ट्राई करो. हो गया ट्राई करके? ठीक है, पॉज कर लो एक बार और ट्राई कर लो, दिमाग लगा लो. यू गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज. We have to do more questions like this. That's why I have a dedicated chapter in the book called games, because every damn paper, every damn year, there's one set definitely on games in the CAT exam, which agar samjha to life is set. Okay, let me make the rules clear. There are 4 rules here which we have. Two adjacent beads, sorry, not beer, sorry, beads cannot be the same, are always of the different color. मतलब अगर यहाँ पे red आ गया, this have to be blue. If this is blue, this cannot be blue. If this is red, none of the next neighbor can be red. Okay, fine. Rule number 1. Two adjacent box cannot be of same color. Okay, rule number 1. Rule number 2, there's at least one green bead any two blue balls. Between any two blue balls, there have to be a green ball. Okay, diagonally and horizontally both, row wise and column wise both. Diagonally नहीं है, there's no rule for that. अरे अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो यार? Why you are adding your brains? डायगोनल की बात नहीं कहना तो तुम क्यों रूल डाल रहे हो? डायगोनल में करेंगे क्या? अरे कॉलम एंड रो की बात करो बस. Third, there's at least one blue ball and at least one green ball between two red. So between red, there have to be one green and one blue ball. Are you fine with these 3 rules? Any doubt in these 3 rules, please tell me. If you have any doubt in these 2 rules, please tell me. Okay. Red together, not possible. Fine. Blue, between 2 blue balls, there have to be a green ball. चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो. ठीक है, एडजेसेंट साथ वाला यार, तुम यार क्या कैसी बातें कर रहे हो यार. ओके, लास्ट वाला, बिटवीन टू रेड बॉल देयर हैव टू बी अ ग्रीन बॉल एंड अ ब्लैक बॉल एंड अ ब्लू बॉल. Same color cannot be adjacent. Red cannot be together. Red cannot be like this. Not possible. Same is not possible. Question number 1. How many possible combinations are there using only two beads? Why I'm talking about beard here? How many possible combinations are there? Only 2. Okay. If I start with the green combination, let's say green. If I put green here, this have to be blue. Green,
ब्लू ग्रीन. अगर ये ग्रीन आ गया, दिस हैव टू बी ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू. ऑपोजिट. ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू green blue green blue and green blue green blue green. Who said green can't be starting? Green can be starting ना, किसने आपको ना बोला है? या फर्स्ट कॉम्बिनेशन. सेकेंड कॉम्बिनेशन सेम एग्जैक्टली उल्टा. ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू. What about red ball? Can I take red as well? Can I start with red? So दो केस आ गए ये वाले. If I start with red between two red, look at the rule number 3. Between any two red, there have to be a green and blue ball. I have to use all the three balls. I can only use two colors. This means red combination I cannot have. Are you with me on this? So answer is two cases. अब बताओ यार, इससे चिंदी क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा यार? इससे चिंदी क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा? बताओ इसमें क्या था यार? I'll repeat. Beep. Okay, I'll repeat again. Using only two colors, I can only use two colors. This means red I cannot use. Why red I can't use? Because if I use red, I have to use green and blue both. Look at rule number 3. Blue and green have to be between two red. So red I can't take. So using green and blue, how many cases are possible? 1, 2. Configuration matlab case. How many cases are there? Between two blues, one green cannot. अरे green आ सकता है ना यार. I can start with blue. Green start किया, blue. Between two blue balls, there's a green ball. Between these two green balls, there's a blue ball, there's a green ball. Akshay, yes. Answer is two cases. Okay. दो cases. Either you start with red or you start with green. Here are two cases. Case number 1, case number 2. This is one complete set of combinations. This is one complete set of combinations. और कौन सा केस है? Why only two cases? हाँ, और कोई केस दिखा दो आप. रेड वाला केस आ नहीं सकता. So we've covered all the cases. Either start with green or start with blue. ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, ऐसे दो सेट करना यार. Not today, not tomorrow. In November. Till November, can you do two set like this? Looks scary, yaar. Sejal, that's the main problem. That's the fundamental problem. Looks scary. Fine, that's the main problem. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. How many different possible, maximum number of possible cases are there with red? How many maximum cases are possible with red? Yes, the problem is for every question I have to draw a separate table. That's the main fundamental problem here. With every table I have to draw separate. Every question I have to draw a separate table. No problem. All I have to do is rule number 2 याद करना है बस. Rule number 3. If I start with red, red के साथ क्या आना चाहिए? It have to be a blue ball and green ball, then red आएगा. अब ड्राइंग मेरी बचपन से बहुत बढ़िया है, वो उसके तो तुम टेंशन मत लो. ओके, रेड के साथ दो जगह छोड़ के ही रेड आएगा, बट डायगोनली रेड आ सकता है. Red is only possible after two places. This means here also I can have red, here also I can have red, here also I can have red. So all the diagonal cases red is possible. How many cases are there? 9 cases. अब बता इसमें क्या था यार, ये क्वेश्चन में क्या था? 10 लाख का क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वर्थ 10 lakh rupees. If you solve only one set, you will get 95 percentile, you will get a 10 लाख की जॉब. एक सेट सॉल्व कर दो बस. To earn 10 lakh rupees, my dad got retirement at the package of 12 lakh. इधर साला एक सेट करने पे 10 लाख. 2 सेट कर लो तुम्हारा जय माता दी.
Okay, this is one combination. I'll do it again. How many different combination are red? I'll do it again. Let's do it again. How many different combination? If I put red here, this can be green, blue, red, and some other color. Are you fine with that? Are you okay? The first line, Siddhant, Tanmay, are you fine with the first line? एक लाइन की बात करो. Are you okay with that? Tanmay, are you okay with that? हाँ. अभी रेड सेकंड रो में रेड कहाँ जाएगा? रेड कांट बी हेयर. आई हैव टू पुट सम अदर कलर. देन रेड कैन come here. Sai, please repeat the question again. Red, something red. No, I can't have more. There have to be at least two people. हाँ, तीन वाले केस भी करो ना. वो भी करेंगे अभी. At least two ना. हाँ, I'll do other cases as well. वो भी कर लो. रेड के बीच में तीन लोग का गैप एंड देन अगेन रेड. उल्टा केस कम हो जाएगा. I want the maximum possible cases. Without table, I think you can't solve it here. Then red some can't come here. Red cannot come here. Red have to come here. Again, no red. Next combination, red have to be here, cannot come here, cannot come here, red coming here. So basically red is coming on the diagonals. How many cases? 9 cases. Arey Baba, at least word, those who are focused on at least word, at least matlab I can remove that. I can have more than combinations. In that case, the number will go down. In case you want to find the minimum cases, then you take the other case na. सेकेंड रूल भी फॉलो होना चाहिए. हाँ, वो तो अपने होगा ना गौरी. सेकेंड केस तो अपने फॉलो होगा. रियाज, yes. I asked, yes. थर्ड रो में फर्स्ट पेज पे सत्यम, दो लोग का गैप चाहिए ना. दो लोग का गैप चाहिए. बिटवीन टू आर देयर हैव टू बी मिनिमम टू पीपल का गैप. दे सेड टू रेड्स बिटवीन टू रेड. थर्ड कैसे इनवैलिड? नहीं, इनवैलिड है ना. रेड के डायगनली मत देखो. डोंट लुक एट द डायगनल वे. आंसर इज दिस. 9 केसेस. आई हैव ट्राइड अदर केसेस एज वेल. इसमें नंबर ऑफ केसेस आर 8. Average time for this is 5 minutes. This is slot 2. This is CAT 2020 slot 2 का question. Okay. दो सेट सॉल्व करें नवंबर तक. The main problem is game में every question is a different type of question. That's the main problem with the games. Every question is a different type of question. ठीक है, दो सेट आपको करना है. 20 लाख की जॉब. एक सेट कर लो, 10 लाख की जॉब. जीरो करके आओ. नॉन कैट एग्जाम. वी हैव सीमैट, स्नैप, एनमेट कमिंग अप एज वेल आफ्टर दिस. टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. Okay, let's try third question based on it. Find the minimum number of blue beads which can be required. Find the minimum number of blue beads. Okay, first tell me, for blue beads to find out, should I use red or not? Red or not? Red use करना है कि नहीं करना है? Minimum के लिए, minimum के लिए. See, if I use blue and green, the cases will become more. I have to use red. I have to use red. Red diagonal wala. So I have to use question number 2 to solve question number 3. Exactly, Karthik. I have to use the last combination. Red use karna padega. Radha, yes. Now, can you find out how many blue are possible? How did you know that? To minimize blue, green, and red. If I want to minimize this, I have to maximize this. Suppose a plus b is 10. B का minimum value कितना आएगा जब a maximum होगा? Means I have to use the red cases. ठीक है, रेड हो गया. आई हैव टू नाउ लुक एट द ब्लू केसेस. ब्लू, लेट्स यूज द कलर. एकदम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्रीन की जगह ब्लू एंड ब्लू की जगह ग्रीन. इफ आई टेक मैक्सिमाइज माय ग्रीन का वैल्यू,
तो ब्लू कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, minimum possible combination is 6. आंसर इज 6. 7 भी राइट है, 9 भी हमने निकाला पहले, बट करेक्ट आंसर इज 6. अभिषेक, दैट्स अ मेन प्रॉब्लम है, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अमन, कौन सा कंडीशन वॉलेट हुआ यार? फाइन, दिस इज अ मिनिमम कॉम्बिनेशन. No condition is violated in this. No animal was hurt while making this video. वन ग्रीन बिटवीन टू बॉल है ना यार, वन ग्रीन, दो ब्लू के भी में ग्रीन आए ना, सब ठीक तो है. नहीं नहीं, सब वैलिड है, सब वैलिड. आंसर 6. आंसर इज 6. नहीं नहीं, 9 केस इज पॉसिबल, बट मिनिमम क्वेश्चन इज मिनिमम वैल्यू. थर्ड रो में चेक करो, ब्लू ग्रीन ब्लू. हाँ, दो ग्रीन के बीच में ब्लू आना चाहिए. बिटवीन एटलीस्ट वन ग्रीन बिटवीन टू ब्लूज. हाँ ठीक है ना, दो ब्लू के बीच में ग्रीन है ही है. दो ग्रीन के बीच में ब्लू, एटलीस्ट वन ग्रीन बिटवीन टू ब्लू बॉल्स. ठीक तो, दैट इज ओके. अरे ऑल ग्रीन नहीं कर सकते रे बाबा, बिकॉज ग्रीन ग्रीन साथ आएगा ना फिर. अमन, ये राइट कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन, दिस इज राइट कॉम्बिनेशन. एक बार चाहेगा कब लेके बैठना, आपको समझेगा पूरा. लास्ट क्वेश्चन, इफ टू रेड बीड्स आर प्लेस इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, अगर यहां पे रेड डाल दिया, हाउ मेनी मोर रेड कैन बी प्लेस्ड सो दैट द मैक्सिमम इज रेड? I want to maximize the red color. Okay, if I put red here, red cannot come here. यार दो जगह छोड़ना होगा. ठीक है, red cannot come here also. I have to use a diagonal opposite. Red can come here, red can come here, red can come here. अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी अगर रेड आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा रेड. So this mean I have to look at this diagonal. और दो जगह छोड़ के साथ में नहीं आ सकता, रेड कैन कम हियर. दो जगह छोड़ के रेड नहीं आएगा, सो रेड कैन कम हियर. Again, two places cannot be red, so red is here, red is here. अभी भी सॉल्व करके दिखा दो, अभी रॉन्ग आएगा आंसर. अभी भी आंसर सबका रॉन्ग आने वाला है. ओ बेटा जी, ओ बाबू जी. हाउ मेनी रेड आर देयर? 8. हाउ मेनी रेड आर देयर? 8. These 8. Okay, answer should be 8. But look at the question again. How many more red beads are required? How many more red beads are required? कितना और चाहिए? दो तो ऑलरेडी आपने यूज कर चुके हो, एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 6. उल्टा ये वाला आसान लगा मेरे को तो यार, उल्टा मेरे को यही क्वेश्चन सबसे आसान लगा. लेट्स डू द क्वेश्चन अगेन. अक्षय, आई नो. Mind game is pure mind game, Aman. Exactly, pure. Red is in this position and this position red है. What other can be red? Red is always in the diagonal, so red यहाँ भी आएगा, red will come here. Two places next to this cannot be red, so red have to be here as well. So I have to complete the second diagonal, and red can also come here. Red cannot come in any of the other places. Akanksha, nahi, it's not about me. I'm saying कि if you understand the logic, then the question become easy to solve.
अरे राहुल नहीं आ सकता ना रेड, यहाँ पे अगर रेड है तो रेड कैनॉट कम हेयर, बिकॉज दो जगह चाहिए ना गैप. ओके, सो आंसर इज दिस. Answer should be 8. Sarvesh, yes. Answer should be 8. No doubt about this. Answer should be 8. But because how many more red are there? 2 are already placed. How many more are required? 6. Answer is 6. चलेगा. ओके, हार्ट अटैक तो देगा यार, ये क्वेश्चन हार्ट अटैक तो देगा. ये आपको प्रैक्टिस करना है यार, ये कर दो बस, आपकी लाइफ इज सेट.